Myself, I'm Ratnabhushan, and welcome to the program, The Great People in the Great Nation. Good morning, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. I would like to tell you the most important fact of today's hour. Kharif crop planting on target, next 10 days crucial. Agriculture Secretary. India's Kharif crop outlook remains good despite weak rainfall in the past week, but monsoon activity in the next 10 days will be the crucial, top agriculture ministry official said. Rainfall in the past week is 19% below the average, but the weather office has forecast above normal showers for the next 2 weeks, calming concern of the cross stress in the early phase of the Rabi season. PM Modi influenced Merkel to introduce global terror theme at the G20 summit. G20 joint working group on the terror is the outgoing and implementation action plan about it with the leaders. The robust anti-terror action plan adopted by the leaders G20 on July 7th was the outcome of the suggestion put forward by Indian Prime Minister Narendra Modi when he had traveled to Berlin in May for the inter-governmental consultations. The next is there is a case for lower rates. Today's facts is basically from Economics Times and Novara Times. The primary task remains fixing bad loan problem. Plumbing inflations and industrial growth warrant reduction in the central bank's policy rates. Goes the chorus after the June figure for the consumer index plunged below 2% to 1.5%. Growth of index of industrial production fell to 1.7% in the May. Nobel laureate Liu Xiaobo dies in Chinese custody. Was diagnosed with the late stage liver cancer in May while serving on 11-year sentence. Liu Xiaobo, the renegade Chinese intellectual who kept vigil on Taiwan Square in 1989 to protect protesters from the encroaching soldiers, promoted a pro-democracy charter that brought him on 11-year prison sentence and was awarded to Nobel Peace Prize 2010 while locked away dies Thursday. He was 61. जाधव की मां को वीजा पर विचार करेगा पाक. जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में फांसी का सामना कर रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की मां के वीजा देने जाने पर पाकिस्तान के गुरुवार को कहा कि भारत के इस अनुरोध पर वो विचार कर रहा है. इसे पाकिस्तान के नरम रुख के तौर पर देखा जा रहा है, हालांकि भारत ने इस बारे में किसी जानकारी से इनकार किया है. नीति बनानी होगी. दिल्ली से सटे नोएडा की एक पॉश सोसाइटी के निवासी और घरेलू कामगार के बीच टकराव की घटना ने महानगरीय जीवन की एक बड़ी समस्या की ओर देश का ध्यान खींचा है, जिसका तत्काल समाधान ढूंढा जाना चाहिए. नोएडा की सोसाइटी में विवाद यहाँ काम करने वाली एक मेड से लेकर हुआ. मेड के परिजनों का आरोप है कि उसको 2 दिन में से घर नहीं जाने दिया जा रहा था और बुधवार सुबह वह बेहोशी की हालत में मिली. गंगा में कचरा फेंका तो 50,000 की पेनल्टी. 500 किलोमीटर के दायरे में कूड़ा फेंकने पर लगेगा जुर्माना. 100 मीटर तट के आसपास नहीं हो सकेगा कोई कंस्ट्रक्शन. 2 साल में गंगा के करीब सभी प्रोजेक्ट करेंगे पूरे और 6 हफ्ते में चमड़ा फैक्ट्री शिफ्ट करने का आदेश दिया गया है. गंगा की सफाई को गोमुख से हरिद्वार से उन्नाव से यूपी की सीमा, यूपी सीमा से झारखंड सीमा और झारखंड सीमा से बंगाल की खाड़ी तक खंडों में बांटा गया है. तो इस तरह गंगा की सफाई पे काम चल रहा है. देखते हैं कब तक सफलता मिलती है. कश्मीर पर चीन के रोल को भारत ने नकारा. कश्मीर पर मध्यस्थता के चीन के बयान पर यहाँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह कहा है कि मैंने इस बार रिपोर्ट देखी है और उससे कहा गया है कि कश्मीर इस क्षेत्र की शांति और अस्थायित्व के केंद्र में है, लेकिन हमारा कहना है कि कश्मीर के मामले में जो मुद्दा केंद्र में है वह आतंकवाद है. Before ending the program, I would like to read the fundamental duties of our Constitution. According to Article 51, it shall be the duty of fundamental duty. It was introduced by the 42nd Amendment of the Constitution 1976 by inserting Part 4 in the Constitution. These duties cannot be enforced by writs. They can be promoted by constitutional methods. There are 11 fundamental duties.
Number one, to abide by the Constitution, respect its ideal institution, the national flag and national anthem, to cherish and follow the noble ideals inspired our national struggle for freedom, to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India, to defend the country's rendered national service when called upon to do, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transacting religious, linguistic, and regional or sectional diversity, to renounce practices derogatory to the dignity of to value and preserve the rich heritage of the composite culture, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife, to have compassion for the living creature, to develop scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform, to safeguard public property and to observe violence, to strive towards excellence in all the sphere of individual and collective activities so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement, and to parent or guardian to provide opportunity for education to his child or what is the major award between the age of 6 and 14. This fundamental duty was added by the 86th Constitutional Amendment Act 2002. So thank you very much. Wish you all the best. Jai Hind.